I said yesterday, like day before yesterday, now we are going to learn reflexive verbs. Now, do you have any idea what reflexive verbs could be exactly? No, ma'am. Okay, so I'll tell you reflexive verb बेसिकली वो होते हैं एज द नेम सजेस्ट जो हमारा प्रोनाउन होता है, जो हमारा डूअर होता है, डूअर एज इन जो काम कर रहा है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको रिफ्लेक्ट करता है. Okay. सो द वर्ब विच रिफ्लेक्ट्स द डूअर इन द पर्टिकुलर सेंटेंस. सो जैसे हमारे जर्मन में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, वैसे हमारे इंग्लिश में भी होते हैं. इट्स जस्ट वी डोंट रियलाइज और वी डोंट यूज इट मच, बट दे आर देयर. तो जैसे Mm-hmm. कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब वर्ड्स होते हैं ना हमारे इंग्लिश में, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव होते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं मी, यू, हिम, ही और शी को. Mm-hmm. So, for example, yesterday I went to the party and enjoyed. एक ये हमारा sentence है. And then yesterday I went to the party and enjoyed myself. तो इन Yes. दोनों में ideally, grammatically, this sentence is correct. That I went to the party yesterday and enjoyed myself. मैंने अपने आप से बहुत enjoy किया. So when you use this myself or yourself in the sentence, so this myself is reflecting I here, right? Because I went to the party, so obviously I enjoyed myself. और किसी ने तो मेरे भी हाथ पे enjoy नहीं किया. So this I and then myself. So this is reflexive. Now, there are in German, there are some specific verbs or some specific things or some specific verbs. कुछ specific verbs, कुछ काम या कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम ये reflexive use करते हैं. Now, while we learn this, there are 2-3 things which you have to understand. First, the meaning of reflexive verb. Second, the verbs with which you can use it, and then the cases, this accusative and dative. So accusative and dative जैसे हमें पता है cases होते हैं जर्मन में. अब ये reflexive verb भी accusative और dative में categorize होते हैं. अब ये accusative और dative कैसे होंगे, that we will see, but before that let's see some more examples. So ये जो लिंक्स है ना, इसमें प्रैक्टिस मटेरियल है और इस Yes, लिंक ma'am. में लिस्ट है. लिस्ट इसमें भी है, बट दिस लिंक हैज लाइक एक्सटेंडेड लिस्ट, तो आप इसके थ्रू भी देख सकते हो. नाउ दिस, सी दिस एग्जांपल, इश वाश दास आउटो. सो दिस इज सिंपली नॉन रिफ्लेक्सिव, बिकॉज इसमें Mm-hmm. इश कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. बट इन दिस सेंटेंस, इश वाशमिश, आई एम वॉशिंग माई सेल्फ और आई वॉश्ड माई सेल्फ, तो यहाँ पे आई रिफ्लेक्ट हो रहा है विश में, मिश में. Wish. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. नाउ some more examples. So unseen is like separable verb. So ish, seer, mish, an, I am getting dressed or I am dressing up myself. So here also ish is being reflected here. Similarly for this you can write similarly for do also you can write do, siehst, dish, an. So यहाँ पे do, siehst, dish, you are dressing up yourself. So यहाँ पे do और dish एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और आई शुड से dish जो यहाँ पे है वो do को रिफ्लेक्ट कर रहा है. So Yes. the main funda of understanding reflexive verb is that the doer is being impacted with the work. Reflexive verb, the doer is being impacted with the work, or the work is reflecting the doer. एक ही बात है, राइट? बिकॉज जो आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है. आई
enjoyed myself, I relaxed myself, I washed myself, I shaved myself, I dressed up myself. So यहाँ पे जो काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आप पे ही आ रहा है, एंड माई सेल्फ योर सेल्फ इज रिफ्लेक्टिंग द डूअर ओनली. सो दैट इज द बेसिक फंडा of reflexive verbs. Now, seeing some more examples here. So, ish, radziera, mish. So, zish, so जितने भी हमारे reflexive verbs होते हैं ना, उसके साथ हम zish लगाते हैं. That means self. अब यहाँ पे आपको my, you, him, her क्या लगाना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वो डिपेंड करेगा कि आपका डूअर कौन है उसके हिसाब से. तो दिस जिश स्पेसिफिकली मीन्स आप इसको एज अ सेल्फ समझो. So zish radzieren, that means to shave or to shave yourself. So ish radziera, mish. Du radziest, dish. Now the thing is, अब यहाँ पे आप इश के साथ क्या लगाओगे, दू के साथ क्या लगाओगे, ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा. इसमें भी दो चीजें हैं, accusative table और dative table. Now let's see the table first, and then we will see that where we can use accusative and where we can use dative. So first पहले आप ये table जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो. So ish in accusative becomes mish. So this blue highlighted is accusative and this yellow highlighted is dative. So ish, mish, mir, du, dish, dir, er, zish, zish, wir, uns, ear, oish, oish, z, zish, zish. Now another important thing, ये जो टेबल है ना, दिस इज वेरी सिंपल टू लर्न बिकॉज इसमें सिर्फ आपको इश और दू का याद करना है, बाकी दिस इज सेम फॉर accusative and dative, zish, uns, oish and then zish. So this is very simple to learn. Now don't mix up this table with प्रोनाउन accusative and dative. इसमें और इसमें काफी फर्क है, तो कभी आप उन दोनों को मिक्स नहीं करो. मैं दोनों को दिखा देती हूँ साथ में. Okay, so this particular table, ish, mish, mir, do, dish, dear, air, een, eam. Now pay attention to this. यहाँ पे air, een, eam है because this is pronoun getting changed as per accusative and dative. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है. जस्ट बिकॉज उसमें भी इशमिश मियर है और दू दिश दियर है, डोंट मिक्स अप दीज टू टेबल्स. ये अलग है एंड देन ये कंप्लीटली अलग है. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ टेक अ मिनट, नोट डाउन दिस टेबल एंड देन वी विल सी कि हम अकुजाटिव और डाटिव का कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें अकुजाटिव यूज करना है या डाटिव यूज करना है. Written.
Done, ma'am. Okay. Ritika written? I'm done. Okay. Okay. So now अभी before we see the table आप इसको ऐसे समझो. Ish, Mish is like myself, and then Mia would be to myself. Or for myself. So while learning dative, we saw na that dative case is basically to whom or for whom. So similarly, here also understand it in this way. Accusative will be like myself, and then dative will be to or for myself. Similarly, this will be yourself only, and then dear will be to or for yourself. Now, while deciding whether to use accusative or dative, let's see this table quickly. यहाँ पे divide किए हुए हैं कुछ verb जो majorly accusative होंगे या majorly dative ही होंगे. Now, the main thing is when there is any second object in a sentence, then that would be dative. If in a sentence that is you only who is doing something with yourself, then it will be accusative. I am repeating it again. Accusative कब हुआ हमारा reflexive verb जब आप कुछ कर रहे हो और उसमें सिर्फ you are the only one person there is no other subject or object. But if there is any other thing in the sentence apart from you, then it would be dative. To understand this, see this example. Ish, washa, mish. So zish, washan is our verb. That means to wash yourself. So ish, washa, mish. यहाँ पे और कोई subject या object नहीं है. It's just you only. So ish, washa, mish. So this is accusative. So mish. अब ish, washa, mir, die Hände. Here you are also there and your hands are also there. So apart from you, there is one more object in the sentence. So that would automatically become dative. So ich wasche mir die Hände. Ich käme mich. Sich kämen is the verb here. Sich kämen, das ist Ahmet Umlaut, okay? So sich kämen, that means to comb yourself. So ich käme mich, aber ich käme mir die Haare, because you and your hair. Aber ich käme mich. So when you don't mention the Haare, you just use mich. But when you use mention the Haare, your hair, then you would use mir. Is it clear? Dative or accusative? Yes, ma'am. Okay. One more example. So Zish, so like Zish etwas kochen. So if let's say you're cooking something for yourself, would that be accusative or dative? When you're cooking something for yourself, तो वो sentence accusative होगा या dative होगा? See this. Tell me if you're cooking. मैम रिपीट करना, आपने क्या पूछा? If you are cooking something for yourself, then वो sentence accusative होगा या dative होगा? Dative. Yes, because for yourself, no? Yes, Not yourself, but for yourself. So अब आप ये बोलो कि I am cooking myself या I am cooking rice for myself. इन दोनों में से कौन सा ठीक है? Obviously ये वाला. So आप अपने आप को तो नहीं कर रहे. So I am cooking myself. तो ये तो completely wrong sentence है. So sich kochen, sich etwas kochen, to cook something for yourself. So by default that would be dative. So if you would write ich koche mich, that is wrong.
but you would say ich koche mir vielleicht der Kaffee oder Tee या कुछ भी. So ich koche mir because obviously you and whatever you are cooking, another object will be there. So by default it will be dative. So now if there is something like for example sich etwas, see this table first. In this mostly sich के साथ etwas लगा हुआ होगा, that means something. तो जब आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, etwas as in something. So sich etwas anhören, to listen to something. You and whatever you are listening to, maybe music or anything. Sich etwas ansehen, to watch something. So when you are watching something, maybe TV or any match or any play, so sich etwas ansehen. So when etwas is there, that means it's dative. Then sich die Bein, sich das Bein brechen, to break one's leg. You and then the leg which you have broken. Sich etwas kaufen. So similarly जैसे हमने kochen का example डिस्कस किया, वैसे ही kaufen. So आप अगर ये बोलोगे ich kaufe mich, that is completely wrong. I am buying myself. No, I am buying something for myself. Right? So for myself, sich etwas kaufen. So ich kaufe mir das Kleid, not ich kaufe mich. Because and even so ich, like it's written already here. So ich kaufe mich, that is wrong. That means I am buying myself. No, but ich kaufe mir, that means I am buying for myself. अब यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, या अगर कुछ नहीं भी मेंशन करते हो, still it would be ich kaufe mir, because that is for myself. So when you see this table in detail ना, हाँ जी रितिका. मैम इस वाले सेंटेंस में आई एम बाइंग माई सेल्फ, तो ये नॉर्मल वो भी तो हो सकता है, आई एम बाइंग इट फॉर माई सेल्फ. मैं सॉरी, हाँ, इट माई सेल्फ, कि मैं ये चीज खुद खरीद रही हूँ, खुद के लिए नहीं, खुद खरीद रही हूँ. So that is not like see reflexive verb. Basically हम यहाँ पे reflexive verb discuss कर रहे हैं. So you are trying to say I bought it on my own, right? Yes. आप ये बोल रहे हो. Yes. हाँ, so on my own is a different thing and myself is a different thing. Here we are talking about reflexive verbs. Reflexive verbs में basically ये होता है जब आप कुछ कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है. सो आई एम बाइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई एम बाइंग दिस ऑन माई ओन. दैट इज योर केपेबिलिटी. दैट इज नॉट समथिंग विच इज इम्पैक्टिंग यू. सो दोनों में डिफरेंट है. गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. So when you are buying something for yourself, you would say ich kaufe mir. And जो आपने सेंटेंस बोला रतिका, उसके लिए आप ये लिखोगे ich habe das selbst gekauft. Selbst as in self, मतलब खुद से. ये वो वाला selbst as in खुद से, on my own वाला self, not myself, yourself, himself, herself वाला self, but this is like on your own. So this means ich habe das selbst gekauft. I bought it on my own or by myself. So on my own or by myself, not for myself. So there is a difference between by myself अपने खुद की capability से and for myself अपने खुद के लिए, because उसका impact आप पर पड़ेगा, right? So that is the difference. ये मैं red से highlight कर देती हूँ different sentence. Now I was saying, once you would go through this list now, you will just while reading through this list, just keep this thing in mind that accusative में only you would be the thing which would be there, but dative में you and the thing which you are doing or additional object will be there. So this arrogant, to get upset. So इसमें और कुछ तो है नहीं. It would be just you who would be getting upset. There is no second object. Similarly, sich benehmen, to behave.
Zish beeilen to hurry. So you are the only one who would be hurried up. इसमें और कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. If you talk about like I have to hurry. Similarly, अब कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे आकुजाटिव भी हो सकते हैं और हमारे डाटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने काउफन एंड कॉखन डिस्कस किया. सो काउफन एंड कॉखन दे आर लाइक फिक्स्ड डाटिव, क्योंकि उसमें आप हमेशा फॉर माई सेल्फ ही लगाओगे. आई एम कुकिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम बाइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ. सो दीज आर लाइक फिक्स्ड डाटिव. बट नाउ देर आर सम सेंटेंसेस, देर आर सम वर्ब्स फॉर योर डेली रूटीन वर्क जो अकुजाटिव भी हो सकते हैं, डाटिव भी हो सकते हैं. नाउ डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस यू आर मेकिंग, that would fall either in accusative category or in dative category. For example, okay, so sich ansehen. See this example first. This could either be accusative, this could be accusative also, and this could be dative also. So sich ansehen means to get dressed. So when you say ich sehe mich an, like I am getting dressed, so to get dressed or to put on something, like putting on a dress or putting on clothes or putting on jacket. So to put on something or to get dressed. So if you are not mentioning what you are putting on, so you would simply, it would simply be accusative, because आप mention नहीं कर रहे हो इसमें that what you are getting dressed up with. So ish sehe mich an, this will be simply accusative. But when you would say sich etwas ansehen, that means to put on something. Here in accusative it only means to put on, but in dative it means put on something. So same sentence here, ish sehe mich an, ये dative में जाके बन जाएगा ish sehe mir die Jacke an, because यहाँ पे आप बता रहे हो that what are you putting on. So that is why it is dative. यहाँ पे doer भी है, and then there is another object also. Apart from this subject, there is subject plus object, but here there is just subject only. So that is the difference. Now there are three things. One category which is fixed accusative, one category which is fixed dative, and then there is one category which can either be accusative or either be dative, depending if you are adding additional object there. Similarly, sich kämen to comb, aber sich die Haare kämen, that will be dative, because यहाँ पे you and your hair both are there. And then like sich waschen, another example here, sich waschen, that means to wash yourself. So when you say I am washing myself, so that would be completely accusative, because it's just you who are there. There is no other object, it's just subject which is there. But sich etwas waschen, to wash something, that would become here sich die Hände waschen or sich etwas waschen, when you wash one's hands, because the subject is also there and the object hands, that is also there. Now when you say I'm washing myself, you would be saying ich wasche mich, because यहाँ पे आपने कुछ mention नहीं किया है that what are you washing, you're just washing yourself. But when you say I'm washing my hands, you would say ich wasche mir die Hände, because you are there and then your hands are also there, so that will become dative, and here it is accusative. ये difference clear है? Yes, ma'am. Now quickly do one thing, ये सारे examples आप note down कर लो, keeping it in accusative and dative category, and then Ritika आप ये वाला भी लिख लेना एक बार, so that this confusion does not occur again. ठीक है? Selbst and then sich. So selbst is like on by like on your own or by myself, and then mich would be for myself. And then we will do some exercises. यहाँ पे एक काफ़ी सारी लिस्ट है verbs की, we'll read it through and then you can learn it also. और इस लिस्ट में सारे verbs it's not like mandatory to learn, but जो डेली रूटीन वाले हैं वो अलग से कैटेगराइज करके मैंने लिखे हुए हैं, वो आप अच्छे से याद कर सकते हो.
Written. Written, guys. Yes, ma'am. Yes, ma'am, written. Okay. So now let's proceed with some examples. So okay, let's just do this exercise together. So all these green highlighted words, they are our reflexive verbs which are given and basis which we have to fill the blanks. Now let's start reading the sentences one by one. Ritika, let's start with you. Moti Start. ish, Lisa. Moti ish, Mut, Murs dash, knock, knock dash, aber, Bratters, Dar, Spiel, spielt im Badezimmer, ihr, ihr ihr mischt dir äh, Reise, Creme, Grazia, Creme. Reise Creme. That means shaving cream. Grazia, Creme. That means shaving cream. Sich duschen. That means to take shower or to shower yourself. And then sich amusieren. That means to amuse or to enjoy yourself. Now we have to fill these blanks in. Ritika, can you try filling it in? What should be the correct answer? Ich muss dash noch dash. Sich duschen is your verb. So how would you in here in the sentence? Ich muss duschen. Ich muss mich noch duschen. Now, since we had modal verb here ना, müssen, muss, तो जो हमारा मेन वर्ब था उसको हमने एंड में प्लेस किया. Ich muss mich noch duschen. I have to take bath. Aber Bart spielt im Badezimmer. But Bart is playing in the bathroom. Er amüsiert sich. He is enjoying himself mit der Rasiercreme. He is enjoying himself with the shaving cream. Clear? Is this sentence clear? Yes, ma'am. या समझ में नहीं आया हमने कैसे फिल इन किया? नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत नहीं आया. समझ में नहीं आया इसमें बताओ. सो देखो फर्स्ट एक तो पहले ये वाला सेंटेंस देखो. दिस इज सिंपल. Sich amusieren is our verb. That means to enjoy yourself. So जैसे हमने यहाँ पे sentences बनाए थे. So the verb at the second place in conjugated manner. तो एक चीज ये ध्यान रखो जब भी आप रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में ये मिश मियर वगैरह यूज करोगे ना, सो इश सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे याद करो इसको. इश वाशर मिश, इश खेम मिश. सो वर्ब के साथ में ही ये मिश मियर दू दियर ये सब लगेगा. दिश दियर. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्शन, ऐसे सेंटेंस बनेगा इसमें. सो similarly, air, subject plus verb, amusiert, conjugated as per air, and then reflection. Air क्या बन जाता है? Sich.
be it accusative or dative. So er amusiert sich mit der Rasiercreme. But here, since we have modal verb here जो already conjugate कर रखा है हमने, so what is the basic like rule while using modal verbs? तो modal verb आप conjugate करके second place पे रखोगे और जो आपको दूसरा वाला verb होगा वो आप end में रखोगे in an infinitive form. So since we have muss here already, so जो ये हमारा डूशन verb है ये end में चला जाएगा और हम सिर्फ zish को after this verb लगाएंगे. So ish, muss, mish, subject plus verb plus reflection और जो main verb है that will go at the end. अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's try next sentence. Sandeep, your turn. Nein. Dash. Here. Dash. Wider die Beine. So sich rasieren is our verb here. आप इसको कैसे लगाओगे? This is a yes no question now. So this means, is he shaving again his legs? So how would you fill this sentence here? Try. गलत सही जैसे भी at least try. मैम जिश पहले लगेगा फिर? This is yes no question है तो verb आपका पहले लगेगा. Okay, वो ठीक है. Because this is yes no question, right? Okay. Is he shaving himself? Is he shaving his legs again? So yeah, yes no question में हम verb पहले लगाते हैं, right? Conjugate करके. So rasiert Yes. the Beine. So is he shaving his legs again? Rasiert sich die Beine. Then Bart says, Kritika, your turn. Bart, nein, Mutti, Lisa, Luke, ish dash nu. Ish washe ish washe Reflection. mish हाँ, ish mishnu wasche sehr schön. Ich wasche mich nur. So no. Ich wasche mich nur. So no mother. Lisa is lying. I'm just washing myself. Next, Sandeep, your turn. Na gut, aber versus doch du Vergiss doch nicht, but don't forget, du musst dash auch die Zähne 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 putzen. So sich putzen, that means to brush. Sich putzen as in to paste. And then die Zähne. So sich die Zähne putzen, that means to brush your teeth. Now we have die Zähne also, and along with this doer. So this will be dative case. So fill in the blank accordingly. Du musst dir auch die Zähne पुtzen, वो ऑलरेडी लिखा हुआ था पहले. I didn't remove it. So du musst dir die Zähne putzen, but don't forget
you also have to brush your teeth. Now, next, Ritika, your turn. Habe ich schon gemacht Jets müssen wir dash nur noch with where it is uns nur noch ansehen. Because we have modal verb here, तो ये पूरा का पूरा verb जो है हमारा end में चला जाएगा sentence के in an infinitive manner. So jetzt müssen wir uns nur noch ansehen. Habe ich schon gemacht. I've already done. That means I've already pasted. But yes, now we also just have to dress up ourselves. Now, next, what is the mother saying? Kinder. Sandeep, your turn. Kinder, ihr sollt dash warm dash air is called draußen. Ihr konntet dash leicht dash. मैम फर्स्ट में आएगा ईयर का आएगा औश पूरा सेंटेंस पढ़ो. Euch warm enzyme ansehen. That means you must dress up yourself warm. Ihr sollt euch warm anziehen. Es ist draußen. Ihr konntet auch euch leicht मैम ये क्या लिखा Erkälten. Mit Umlaut. That means to catch cold. Sich erkälten, to catch cold. So it's very cold outside. Es ist kalt draußen. Draußen bedeutet outside. Ihr könntet euch leicht as in easily or quickly erkälten. So it's very cold outside and you could easily catch cold. Next sentence, what does Lisa say? Murti war dash meine Jacke jetzt habe ich nichts zu tragen. But mother bath. So here we will use fish. Here we will use fish. SICH. But what would be the sentence? Bad fish meine Jacke. Sich meine Jacke an. Anziehen ना. So this is Tren Baras verb. अब ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमारा कोई मोडाल वर्ब नहीं है जैसे यहाँ पे था. So Bart anzieht sich meine Jacke an. So Bart has wore my jacket. Jetzt habe ich nichts
So trage. Now I don't have nothing. I have nothing to wear. Now, genug Kinder, enough children. Geht jetzt. Now let's go. Der Schulbus wartet. The school bus is waiting. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. हाँ जी मैम, clear. Okay. So now let's quickly read through this list. ये एक बार लिस्ट डिस्कस कर लेते ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, और उसके बाद देयर इज वन क्विक होमवर्क फॉर यू टू. सो एज ऑफ नाउ आई थिंक आप परफेक्ट में सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे. सो डू जस्ट वन थिंग, दिस मॉर्निंग रूटीन वाला एक्सरसाइज. सी द पिक्चर एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस, रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस. और ये आप नोटबुक में करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे और फिर मुझे फोटो खींच के भेजोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड देन आई विल चेक. So as of now, only this would be your homework till tomorrow. और ये आप मुझे कल दिन तक करके भेजना. Now let's quickly see the list first. Zish Argan. See the word. Say the words after me. Zish Argan. Zish Argan. Zish Argan. Zish Benemen. Zish Bemegan. Bememen. Benemen. Benemen. Zish Beeilen. Zish Beeilen. Beeilen. Zish Entscheiden. Zish Entscheiden. Zish Entschuldigen. Zish Entschuldigen. Zish Erholen. Zish Erholen. Zish Erinnern. Zish Erinnern. Zish Erkälten. Zish Erkälten. इसको बोल दो क्या. Hello. Hello. The net got disconnected. Guys, just give me a minute. I'll be back in a minute. Just a minute. Hello. Yeah. So, sich fragen. Zish fragen. Now, like fragen only means to ask, question, to question. Aber sich fragen, that means to wonder. So, ich frage mich. I wonder myself. I'm wondering. If there is something which surprises you or wonders you, you would be saying ich frage mich. Aber ich habe eine Frage oder ich frage dir. Now, ich frage mich. Aber ich frage ihn. Can you guys tell me what is the difference between these two sentences?
das ist sich fragen, ich and mich. Mich is reflecting ich. So this is I am wondering myself. Sich fragen. Aber here, fragen has been used in a sense of to ask question. Ich frage ihm. I am asking him. So ihm is not reflecting ich, na? So that is not reflexive verb. So that is why it has been used in the sense of to ask question. Fragen. Now, sich freuen, sich freuen, sich krank fühlen, sich krank krank fühlen, fühlen, sich gewöhnen, sich gewöhnen, sich hinlegen, sich hinlegen, 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 sich interessieren, sich interessieren, 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 sich sich konzentrieren, to sich concentrate, konzentrieren, 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 concentrate, konzentrieren, sich setzen, sich setzen, sich treffen, sich treffen, sich überlegen, sich unterhalten, sich unterhalten, 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 sich verlieben, sich verbiegen, lieben, verbiegen, lieben, verlieben, sich verstehen, sich verstehen, sich vorbereiten, sich vorbereiten, sich wundern. sich wundern. Now, these are the verbs which are very commonly used, which are can either be accusative or dative. So, sich abtrocken, to dry off, sich abtrocknen, abtrocken, abtrocknen, sich anziehen, sich ansehen, sich ausziehen, sich ausziehen, sich umziehen, sich umsehen, sich baden, sich duschen, sich duschen, sich rasieren, sich rasieren, sich schminken, sich schminken, sich strecken, sich strecken, sich umziehen, sich umsehen, sich waschen. sich waschen, Yep. Then sich die Haare bürsten. That means to brush. Sich, sich die Haare bürsten, then sich die Haare föhnen. sich die Haare föhnen, Sich die Haare kämmen. sich die Haare kämmen, Yes, that means to brush your hair, to blow dry your hair, and to comb your hair. Sich die Zähne putzen. sich die Zähne putzen, Sich die Beine rasieren. sich die Beine rasieren, Then sich die Haare waschen. sich die Haare waschen, Yes. And then last, sich etwas anziehen. sich etwas ansehen. मैम ये vocab तो हम जो आपने होमवर्क दिया उसमें यूज हो जाएगी. हाँ, ये सारे जितने वर्ड्स हैं ना, ये जो होमवर्क है वो डेली रूटीन वाला है एक्चुअली. सो इफ यू सी द इमेजेस,
people are doing the daily routine. They are dressing up, they are shaving, they are bathing, they are drying off, they are They are brushing doing all home. their Huh. selves. So daily routine work. So they are doing something with their self, with their own self. So accordingly, you have to just make simple sentences. Pronoun यहाँ पे already दिया हुआ है. So accordingly, you have to make sentences. और majorly यही वाला list use होगा. This one, morning routine वाला reflexive verbs. Clear? Yes, ma'am. Okay then. See you tomorrow. Take care. Bye, ma'am. Bye. I'll just put this list in share drive abhi. Okay.